Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivanadari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivanadari Yasoda Nandana Raja Jana Ranjana Soda Nandana Raja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivanadari Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Gurudev Jaya Gurudev
Srila Prabhupada ki jai. Jayam Vishnupad Paramahamsa Paravajakacharya Satar Sachashi Srimad Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the lotus feet of Shri Guru and Shri Gauranga. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna. Good evening. Thank you all for coming. तो आप सबका स्वागत है यहाँ पे आने के लिए. धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए. I'd like to say that to be a soul in a human machine is one of the most challenging lives there is. तो मैं कहना चाहते हूँ कि एक मनुष्य शरीर के यंत्र में एक आत्मा का होना बहुत ही एक चुनौतीमय स्थिति है. Animals live by intuition. Animals live by intuition. तो जो not intuition, I'm sorry, it's instinct, thank you. तो जो पशु हैं वो अपने स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं. So if a tiger comes to attack a deer, she runs, she escapes, she shakes off the trauma, and that's it. तो अगर कोई शेर या बाघ किसी हिरण के पीछे पड़ता है तो वो भागता है, अपनी जान बचाता है और वो भाग चला जाता है वहाँ से. तो ये यही होता है. But if somebody or something attacks us, we go and tell all our neighbors about how bad that person was, and we start movements against that person and gossip against that person. तो लेकिन हमारे साथ अगर कोई कुछ बुरा करता है, हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता है, तो हम लोग पूरे मोहल्ले में जाके हल्ला बोलते हैं और उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ देते हैं कि देखो इसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया. So, in the human form of life, we're given the gift of intelligence. तो मनुष्य जीवन में हमको एक बहुत सुंदर उपहार मिला है, ये बुद्धि, इस बुद्धि का. So it's a gift, and with every gift there is a responsibility. तो हर एक तोहफे के साथ, हर एक पुरस्कार उपहार के साथ एक जिम्मेदारी आती है. So sometimes we get carried away and we use our intelligence to blame other people. तो कई बार हम लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने के लिए. Our intelligence is actually meant to discern what we need to do to take the next step in evolving our consciousness. तो जो बुद्धि हमें मिली है, ये हमें निर्णय करने के लिए मिली है कि मैं अगला कदम क्या लूँगा जिससे मैं अपनी चेतना का और विकास कर सकता हूँ. So it's a big responsibility. ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. Now you come to Krishna consciousness and you say, I don't want to just be a human being, I want to be a conscious, Krishna conscious human being. तो जब आप भक्ति में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आप मेरे को बस मनुष्य बनना है, बट मेरे को कृष्ण भावना भावित मनुष्य बनना है. So we've added now more responsibility on top. तो इससे थोड़ी जिम्मेदारी हमारी और बढ़ जाती है. When we hear the word responsibility, sometimes we become a little afraid. तो जब हम ये शब्द सुनते हैं जिम्मेदारी, तो कई बार हम थोड़ा डर जाते हैं. What could responsibility mean that would make us afraid? तो ये जिम्मेदारी का मतलब क्या हो सकता है जिससे हमें डर लगने लगता है? Tell me. तो आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग क्या समझते हैं जिम्मेदारी से कि आपको डर लगने लगता है? What could we make responsibility mean? That we have to live a disciplined life, that we have to, right? Anxiety in our life.
pressure, burden, obligation. तो बता रही माता जी कि हमें जिम्मेदारी का मतलब हमें जो है एक नियंत्रित जीवन जीना पड़ेगा और एक चिंताओं से भरा जीवन होगा, हमारे पर और दबाव आ जाएगा जब हम जिम्मेदारी भरा जीवन चुनते हैं. Or it could mean guilt and shame, like I'm responsible. If I'm not responsible, I'm in bad trouble. Responsibility could also mean I'm responsible for something. That means I'm to blame if it goes wrong. तो जिम्मेदारी का मतलब ये भी है कि भाई अगर मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और कुछ अगर गलत हो जाता है तो मैं ही जिम्मेदार होऊंगा और मेरे ऊपर ही दोषारोपण आएगा, इससे भी हम लोग भयभीत हो जाते हैं. So I'd like to say that actually the definition I use for responsibility is not about burden, obligation, shame or blame. तो जिम्मेदारी का जो अर्थ मैं कहना चाहती हूँ, ये कोई भार नहीं है, बोझ नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई दोषारोपण नहीं है और कोई शर्म की बात नहीं है. Responsibility is a gift we give ourselves. तो ये जो जिम्मेदारी है ये एक तोहफा है या उपहार है जो हम अपने आप को देते हैं. We can't impose responsibility on another person. तो हम ये जिम्मेदारी दूसरे को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते. Responsibility is the willingness to say, I have choice in my life. तो जिम्मेदारी का मतलब है ये अपने आप से कहना कि मेरे पास जीवन में कुछ चुनाव हैं. Responsibility is the opportunity to take the gifts that Krishna has given them and use them and invest them properly. तो इस जिम्मेदारी का मतलब है जो कृष्ण ने हमें उपहार दिए हैं उनको चुनना, उनको इस्तेमाल करना और उनको अपने जीवन में अपनाना. So in that light, we'll talk about our topic tonight. तो इस तरीके से हम विषय वस्तु पे आते हैं आज के. So the topic for tonight is integrity. तो आज का जो विषय वस्तु है वो इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा है. Yes. So we often in classes we talk about the absolute truth. तो हम अपनी कक्षाओं में अक्सर ये कहते हैं परम सत्य की बात करते हैं. The Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita are filled with the absolute truth. श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता ये परम सत्य से पूरी तरह से भरा हुआ है. We talk about the truth, and yet we don't often talk about being truthful. तो हम परम सत्य के बारे में बात करते हैं, बट एक निश्चितता के बारे में, सत्य के बारे में हम लोग सत्य बोलने के बारे में, स्वयं के बारे में हम लोग कई बार बात नहीं करते. So Krishna is light, Krishna is truth. कृष्ण जो है प्रकाश है. And the illusory energy is illusion, it's darkness, it's ignorance, it's non-truth. और कृष्ण की जो माया शक्ति है वो अंधकार है, वो एक तरह से भ्रम है और असत्य है. So integrity, I'll just give you a little example of integrity. Let's say there's an airplane and it's just 1% off course. Not a big deal, right? तो एक सत्यनिष्ठा का एक उदाहरण लेते हैं कि कोई हवाई जहाज है, मान लीजिए उड़ रहा है वो, तो हल्का सा 1 डिग्री वो अपने या विमान मार्ग से थोड़ा इधर भटक जाता है, तो कोई बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 1 डिग्री भटका है वो. So what happens when we're 1% off course and we go a really long distance, like from New York to India? तो अब देखिए 1 डिग्री का ही फर्क था, लेकिन बढ़ते इतना बढ़ गया आगे जाके कि विमान न्यूयॉर्क की जगह भारत में आ जाता है. I might end up in Dubai. और क्या पता दुबई में भी आ जाए. And I don't have a visa for Dubai. दुबई में पहुंच गए लेकिन वीजा नहीं है आपके पास दुबई का. So similarly, sometimes we think, what is the big deal if I tell a little white lie?
तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि क्या बहुत बड़ी बात है, थोड़ा सा मैंने झूठ बोल दिया तो. So what's the big deal if I tell a little white lie? तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि मैं थोड़ा झूठ बोल देता हूँ. What happens? क्या होगा अगर हम लोग थोड़ा सा झूठ बोल देते? We're what? We're diverting from our current situations. We won't get the desired result. You get a habit. So let's say somebody's calling me and they want me to come on the phone or they want me to come do some service and I just say, I'm sick. तो कोई मेरे को बोल रहा है सेवा के लिए, कोई मेरे को फोन कॉल कर रहा है और मैं बस बोल देता हूँ कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है. No big deal, right? कोई बड़ी बात नहीं है. But then the person finds out that I wasn't really sick. तो फिर बाद में व्यक्ति पता करता था कि तो कोई बीमार नहीं थी. Then what do I have to do? तो अब मैं क्या करूं? What's that? Yes, but what do I have to do if they catch me and they said, oh, I heard you weren't sick. What do I have to do now? What's that? I tell another lie. तो अब क्या करें? अब मेरे को पकड़ लिया उन्होंने कि अब तो बीमार नहीं थे, तो क्या करें? तो अब थोड़ा और झूठ बोल दो फिर. Or justify my lie. Well, I was sick, but I got better. तो और मैं अपने झूठ को सत्य साबित करने की कोशिश करूंगा. Yeah. And what does this do? Creates more and more habits of lying. तो अब किससे क्या होगा कि मैं और झूठ बोलेंगे और झूठ बोलने की आदत में और अपने अंदर बढ़ावा दूंगे. And then after a while, it becomes normal to lie. और कुछ समय बाद वो मेरे मामूली सी बात हो जाएगा झूठ बोलना. And then we don't even recognize that we're lying. और हमें फिर पता भी नहीं चलेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं कि नहीं. Oh my gosh. This is how the elusive energy gets in. तो ये ऐसे ही माया प्रवेश करती है हमारे जीवन में. In this age of Kali Yuga, इस कलयुग में Dharma only has one leg left, right? तो धर्म के सिर्फ एक ही पैर बाकी हैं अभी. Which leg? Truthfulness. सत्यता. So if we don't have truthfulness, we have no leg to stand on. तो अगर ये सत्य का पैर नहीं रहेगा तो हमारे पास कोई सतह मतलब जमीन ही नहीं रहेगी. Yeah. I don't want this to be like such a heavy topic that everybody's like now thinking, oh my gosh. It's just something to think about. तो ये बहुत गंभीर विषय है कि आप सब लोग सोच में पड़ गए होंगे कि ये Now, in the case of telling the lie about I'm sick, you know, sometimes it seems easier to just tell a little white lie. कई बार झूठ बोलना आसान लगता है. Maybe it's going to take a little longer to be truthful. तो सत्य बोलने के लिए बहुत समय लगता है. Maybe I have to explain, look, I'm feeling really stressed. I did this, and I don't know if I can maintain my stamina to do this anymore. तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं थक गई थी, मैं कार्य में सेवा नहीं कर सकती थी, थोड़ी थकान थी शरीर में. Maybe I have to admit that I'm not Krishna and I can't do everything and I'm fallible. तो मेरे को ये भी मानना पड़ेगा कि मैं कृष्ण नहीं हूँ, सब कुछ नहीं कर सकती, मैं भी थक सकती हूँ. Maybe I have to admit that, you know, I do get exhausted sometimes. मेरे को भी कई बार थकान हो जाती है. That might be a little hard. तो ये थोड़ा कठिन लग सकता है. Yeah. It might be a little harder to tell the truth. तो सत्य बोलना कई बार थोड़ा मुश्किल होता है. What are the long-term consequences of not telling the truth?
तो लंबे समय में क्या परिणाम हमको झेलने पड़ सकता है अगर हम सत्य नहीं बोलते तो? They wear down on our consciousness. तो हमारी चेतना को नीचे ले जाते हैं. Those lies wear down our consciousness. तो ये जो झूठ है हमारी चेतना को नीचे ले जाते हैं. We don't feel good inside when we lie. हमको अच्छा नहीं लगता अंदर से जब हम झूठ बोलते हैं. Yeah, it creates stress inside of us. हमारे अंदर ये तनाव की स्थिति पैदा करता है. We're not aligning with our soul self. तो हम खुद से ही जब झूठ बोलते हैं तो. So let's talk about truth a little bit here. सत्य के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे यहाँ पे. I was surprised to find that in every single canto, truthfulness is mentioned. तो मेरे को बहुत अद्भुत लगा कि हर एक भागवतम के स्कंद में सत्य के बारे में एक चर्चा की गई है. I'm not going to read all the many things that I found. It was just interesting how many I found. तो सब कुछ तो नहीं बता पाऊंगे, बस जो जो कुछ मुख्य हैं उन पे हम चर्चा करेंगे. Here's a quote from Srila Prabhupada giving a class in 1973. प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक भागवतम कक्षा में 1973 की. The brahmanas should be taught how to become truthful first of all. तो ब्राह्मणों को ये चाहिए, सिखाना चाहिए कि कैसे सत्य बोलें. A brahmana will never speak a lie at any cost. ब्राह्मण जो है किसी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलता. It is stated that even if his enemy inquires something confidential from him, he'll say, yes, this is my position. तो अगर कोई शत्रु भी कुछ गुह्य चीजों के रहस्य के बारे में जानना चाहता है तो उसको हिचकते नहीं है सत्य बोलने से. This is truthfulness. ये सत्यता है. He'll not even guile against his enemy. Guile, a lie against his enemy. तो वो ब्राह्मण जो है अपने शत्रु से भी झूठ नहीं बोलता. Even Kshatriyas, they are also truthful men. क्षत्रिय भी जो है सत्य का पालन करते हैं. Truthfulness is so valuable. सत्यता इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है. It makes one a powerful brahmana. ये एक व्यक्ति को एक शक्तिशाली ब्राह्मण बनाती है. Now we could say, well, I'm not a brahmana and I'm not a kshatriya. We could say that. तो हम कह सकते हैं कि मैं ना तो ब्राह्मण हूँ ना मैं क्षत्रिय हूँ. However, in the Bhagavad Gita, the qualities of the living beings in general include truthfulness. तो लेकिन भगवत गीता में एक जीवात्मा के गुणों का वर्णन जब किया जाता है तो उसमें एक गुण का वर्णन है सत्यता. And in the purport to that verse, Bhagavad Gita 10:4-5, there's a verse that said, according to social conventions, it is said that one can speak the truth only when it is palatable to others. तो भगवत गीता के 10वें अध्याय के 4-5वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक सामान्य समाज में सत्य तभी बोला जाता है जब वो रुचिकर हो. Prabhupada said that is not truthfulness. तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो सत्य नहीं है. The truth should be spoken in a straightforward way so that others will understand actually what the facts are. तो सत्य को एक सीधे तरीके से हम लोग कह सकते हैं जिससे लोगों को पता चले कि सत्य क्या है. So now it says the qualities of the godly qualities, including being truthful. Godly qualities. तो अब दैवी गुणों के बारे में भगवान बता रहे हैं. And it says in the Srimad Bhagavatam, the 7th canto, 7वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है that a Sudra शूद्र is free from duplicity, not stealing, and always speaking the truth. शूद्र कपट से मुक्त होता है और वो चोरी नहीं करता और वो हमेशा सत्य बोलता है. So, if we're a Sudra, we're truthful. तो शूद्र के लिए भी सत्य बोलना कितना आवश्यक है. Then we could say, well, I'm less than a Sudra.
तो हम कह सकते हैं मैं शूद्र से भी नीचे हूँ. But in Srimad Bhagavatam, 11th canto, says the duties of all members of society are non-violence, and then it says truthfulness and honesty, both side by side. तो लेकिन 11वें स्कंद में सारे जितने भी लोग हैं उनके गुणों के बारे में वर्णन किया जाता है कि अहिंसा, सत्य और एकनिष्ठता. So I don't think we can get out of it with any excuses. तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी तरह सत्य से निकल के बच पाएंगे. So, what's the big deal about telling a little white lie? तो क्या बड़ी बात है कि मैं थोड़ा सा झूठ बोल देता हूँ. If someone finds out that we were not truthful, what does that do to the relationship? तो अगर किसी व्यक्ति को पता लगता है कि सामने वाले व्यक्ति को पता लगता है कि मैंने झूठ बोला, सत्य नहीं बोला, तो इससे हमारे संबंधों में क्या प्रभाव पड़ेगा? They don't believe each other. They don't. Yep. Hamper it'll probably ruin the relationship after a while. Yep. We are losing the trust of each other. We're losing trust. Trust. That's the word I was looking for. तो हम जब ऐसा होता है तो एक दूसरे से हम अपना विश्वास खो बैठते हैं. In Krishna consciousness, we want to create communities of love and trust. तो कृष्ण भावनामृत में एक ऐसे हम संगठन का निर्माण करते हैं कि वो आपसी प्रेम और सत्य पे आधारित हो और विश्वास पे आधारित हो. Truthfulness is a foundation. तो सत्य बोलना उसका नींव है ऐसे समाज की. When you build a building, what's the most important part of the building? तो अगर आप कोई इमारत बनाते हो उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? Foundation. नींव. The bigger the building, the deeper the foundation. जितनी बड़ी इमारत होगी उसका नींव भी उतना ही मजबूत होगा, गहरा होगा. Now, we're not only building temples for Krishna. तो हम सिर्फ कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बना रहे. We're building communities of love and trust. और ये हम संगठन का भी निर्माण कर रहे हैं जो भी आपसी प्रेम और विश्वास पे आधारित है. Buildings don't have feelings. इमारतों में कोई भावनाएं नहीं होती. People have feelings. तो मनुष्यों में, लोगों के अंदर भावनाएं होती हैं. Without a foundation of love and trust, our communities will not grow and they will not maintain over time. तो बिना इस नींव के हमारा संगठन या समाज विकसित नहीं होगा और वो पूरी तरह से मतलब वो ढंग से वो अपना कार्य नहीं कर पाएगा. So, I guess integrity and truthfulness is kind of an important aspect. मुझे लगता है कि ये सत्य बोलना और एक निष्ठता ये बहुत ही आवश्यक है. What do you all think? Is it important? आप लोगों को क्या लगता है ये आवश्यक है? Is it valuable? When we have truthfulness and when we can depend on one another to be truthful, how much we can rely on one another with confidence. तो अगर हम सत्य बोलते हैं या हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखते हैं सत्य के कारण, तो हम कितना ज़्यादा एक दूसरे का भरोसा जीत सकते हैं इससे. Now that helps for our community. Personally, what does lying do for our own integrity and our own Krishna consciousness? तो ये तो कम्युनिटी या संगठन के बारे में था. अपने निजी जीवन में हमारे झूठ बोलना कितना ज़्यादा एक कह सकते हैं कि कितना फर्क दे सकता है अपने हमारी कृष्ण भावनामृत के विकास में.
if we can't be truthful in the little things in life, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर हम सत्य नहीं बोल सकते, how will we be able to be truthful to our vows? To कैसे Krishna? कैसे हम जो कृष्ण के प्रति हमारे संकल्प हैं, हमारे व्रत हैं, उसके प्रति हम एकनिष्ठ हो सकते हैं? How will we be able to do that? कैसे हम कर पाएंगे? If I can't lift 1 pound, तो अगर मैं कोई 300 ग्राम या 400 ग्राम का वजन नहीं उठा सकती, how will I ever lift 10 pounds? कैसे 3 किलो का वजन उठा सकता हूँ? But the elusive energy, she's smart. पर ये माया देवी बहुत चालाक है. She knows she can't get us with a huge, big, go into the bar. She's not going to get us that way. We're not going to do that. तो ये माया देवी बहुत बड़े पैमाने पे हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालती. She works little by little, almost imperceptibly. तो माया बहुत ही सूक्ष्म तरीके से धीरे धीरे धीरे, आप इसको देख भी नहीं सकते, ऐसे कार्य करती है माया. Oh, it's not a big deal. ये कोई बड़ी बात नहीं है. Not a big deal. थोड़ी बड़ी बात नहीं है ये. Not so bad. इतना बुरा नहीं है. Everybody else is doing it. हर कोई कर रहा है. Well. Well, that's what happened to me. ये क्या मेरे साथ नहीं होता है. You know, we used to collect funds and say things to get people to give money. तो आप बोलते हो लोगों को, उनसे दान मांगते हो और बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं उनको. And it just grew and it spread and it infected our whole community. ये फैलता है और पूरी तरह से विनाश कर देता है और ये तरह एक तरह से बहुत बुरा प्रभाव डालता है हमारे इस समाज में. 30 years later, I said, I didn't come to Krishna consciousness to be a liar and a cheater and a fraud. तो 30 साल बाद अपने आप से पूछते हैं फिर कि मैं कृष्ण भक्ति में आया था, झूठ बोलने के लिए नहीं आया था, मैं धोखेबाज बनने के लिए नहीं. I'm totally out of alignment. मैं पूरी तरह से जो है अपना रास्ता खो चुका हूँ. How can I bring myself back into alignment with the truth? तो मैं कैसे दोबारा उसी रास्ते पे लेके आऊँ अपने आप को? The truth is so powerful. तो ये सत्य के रास्ते पे चलना इतना आवश्यक है. The truth will set us free. The truth can set us free. तो सत्य बोलना, सत्य हमें मुक्त कर सकता है. And और it might make us angry at first. तो पहले हमें थोड़ा गुस्सा दिलाएगा ये सत्य बोलना. When I discovered how far away from my goal I was after 30 years of practicing, I was pretty angry. तो जब मुझे पता लगा कि 30 साल बाद मैं कितना तो अपने लक्ष्य से कितना ज़्यादा भटक गई हूँ, तो मेरे को पहले बहुत गुस्सा आया. Angry at myself too. मुझे खुद पे भी गुस्सा आया बहुत. So I could have given up. तो मैं छोड़ नहीं सकती थी इस चीज़ को. But somehow Krishna let me stay. तो कृष्ण ने मेरे को बोला, मेरे से बोलना. And little by little bring my life back into alignment. तो धीरे धीरे कृष्ण की कृपा से धीरे 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 अपने रास्ते, अपने जीवन को उसी रास्ते पे दोबारा लेके आने. Truth is so powerful. सत्य बहुत शक्तिशाली है. We have the absolute truth. We have the philosophy of the absolute truth. तो हमारे पास सिद्धांत है, दर्शन है परम सत्य का. But you can't stick the truth on top of lies. तो आप सत्य के परम सत्य के ऊपर, झूठ के ऊपर आप सत्य की नींव नहीं रख सकते. It won't stick. वो टिकेगा नहीं. Before you paint a roof, I saw somebody painting a roof today, red. Before you paint, what are you asked to do? तो जब आप पेंट करते हो, कई बार छतों पे पेंट करते हो, तो पेंट करने से पहले क्या करते हैं?
Clean. सफाई करते हो, Got to clean it first. तो उसकी पहले सफाई करते हो। So we need to clean our hearts. तो सबसे पहले हमको अपने हृदय की सफाई करनी पड़ेगी। And then we don't really have to stick the truth on top. तो सॉरी, We don't have to stick the truth on top. तो इसलिए और फिर जब सफाई हो, हृदय की सफाई हो जाएगी तो उसमें सत्य को उसके झूठ के ऊपर नहीं रखना पड़ेगा अलग से। When we clean our hearts, there's the truth right in our heart. तो जब हृदय साफ करते हैं तो देखते हैं कि ये सत्य जो मेरे हृदय में ही है। Krishna's in our heart. कृष्ण हमारे हृदय में है। Our real self is in our heart. हमारा खुद का स्वरूप अपने हृदय में ही है। And when we get to that place, that truth is revealed to us and it matches the absolute truth we read about. तो ये जब सत्य हमें पता लगता है तो परम सत्य के दर्शन से जो हमारा मिल जाता है ये सत्य। So how do we start to bring ourselves into alignment? तो कैसे हम शुरुआत करें इस अपने को इस रास्ते पे लेके आए, सत्य के रास्ते पे? I mean, I'll just talk about myself. How did I start to get myself in alignment? Maybe none of you were in my position. तो मैं निजी रूप से मैं कैसे इसमें अपने आप को उसी दोबारा सत्य के रास्ते पे लेके आ सकती हूँ? The first step I took was to mean what I say. पहला मैंने कदम लिया कि जो मैं बोलूँ उसका वो यथार्थ बोलूँ। If I say I'm going to give the class at 7 o'clock, I'm going to be here at 7 o'clock. अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे 7 बजे क्लास देनी है, कक्षा देनी है, तो 7 बजे मुझे देनी है कक्षा। What's the big deal if I'm 5 minutes late? तो उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा मैं 5 मिनट लेट ही हो जाती हूँ तो? I'm 5 minutes late. You're 5 minutes late. She's 10 minutes late. He's 15 minutes late. Somebody's a half an hour. What's the big deal? तो आप 5 मिनट होते हो, ये 10 मिनट होते हैं, 15 मिनट होते हैं, कोई आधा घंटा लेट हो जाता है, तो उसमें क्या बड़ी बात है? When we mean what we say, people can trust us. And they can know she's going to start the class on time. And if I'm not there, I'm going to miss it. तो लेकिन जब हम जो यथार्थ रूप से चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं तो लोगों का विश्वास हमारे ऊपर पड़ता है। यानी कि अगर मैं 7 बजे क्लास दूंगी तो लोगों को पता है कि हाँ ये 7 बजे क्लास देंगी, तो इसलिए 7 बजे लोग आएंगे। That's the first level of integrity. तो ये पहला स्तर है एक निश्चितता का। If we can't keep our little word in little things like that, how will we honor our big vows? तो अगर हम इस चीज़ पे नियंत्रण नहीं कर सकते, छोटी छोटी चीज़ों पे, कैसे बड़े लेवल बड़े स्तर पे हम लोग अपने नियमों के ऊपर, अपने व्रतों के ऊपर टिके रह सकते हैं? Don't believe that voice that says, not a big deal. तो इस चीज़ पे आप मन की आवाज़ से मत विश्वास करो कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। The next level of integrity is to say what we mean. Say what we mean. Mean what you say and say what you mean. तो दूसरे स्तर का जो एक निष्ठा है वो ये है कि आप जो कह रहे हो उसको विचार विमर्श करके बोलो। So say what you mean means to be clear. तो इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोलने वाले। It means to be responsible for your words. आपको जिम्मेदार बनना होगा अपने शब्दों के प्रति। It means when someone asks us to do a service, we say, Prabhu, if I were Krishna, I would do all these services, but I have so much on my plate. तो आप बोलोगे, कोई सेवा के लिए बोलता है, प्रभु मैं कृष्ण नहीं हूँ, कृष्ण होते तो सारे सेवा कर लेते, लेकिन मेरे पास पहले ही बहुत सारी सेवाएं हैं मेरे सामने। And then if you say, but it's for Krishna, तो फिर आप बोलोगे ये तो कृष्ण के लिए है। I will say, if I say yes to you, then I will not be able to honor what I had told other people that I promised them to do. And I will be breaking my integrity, and I won't even be able to do what you want me to do nicely either.
तो अगर मैं आपको फिर अगर कोई बोलता है कि तो कृष्ण के लिए है, तो फिर आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कि प्रभु अगर मैं ये सेवा को आपको लेती हूँ तो मैंने कई लोगों से और वचन लिया हुआ है, तो मैं उनका वचन को तोड़ूंगी और मैं इस तरह से अपनी एक निष्ठता खो दूंगी, और मैं जो आपने सेवा मेरे को दी है वो भी मैं अच्छे से नहीं कर सकूंगी। So say what you mean means to be clear. If something happens and I'm feeling upset, you made me upset. I don't have to blame you. I can say, I'm feeling upset. तो जब आप जब बोलते हो उसको विचार विमर्श करके बोलते हो, तो कोई आपको कुछ कष्ट होता है, कोई तो आप ऐसे नहीं कहते कि आपकी वजह से मेरे को कष्ट हो रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ मेरे को बुरा लग रहा है। I can say this doesn't work for me. ये बोल सकते हो कि ये ऐसे ये इस तरह से मेरे मतलब ये ऐसे मेरे को नहीं अच्छा लग रहा। I don't have to blame you. मुझे आपके ऊपर दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है। That's not bringing more clarity to the world. तो ऐसे करने से ये समाज में कोई बहुत ज़्यादा एक स्पष्टता नहीं आएगी। It's most of souls in human beings avoid pain at every cost. We avoid pain at every cost. तो मनुष्यों में हम लोग कोई भी दर्द को अनुभव नहीं करना चाहता, किसी भी तरीके से अपने कष्ट को वो दूर करना चाहता है। We avoid it by distracting ourselves. We avoid it by suppressing it. तो हम अपने कष्ट को हम वहाँ से हट जाना चाहते हैं, या फिर अब दबा के हम लोग अपने कष्टों से हटना चाहते हैं। Now, if we have a pain in our stomach, we might think, oh, what's going on, and be curious about it. तो अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मेरे को एक जिज्ञासा हो गई, तो मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? And we might go to the doctor and find out and get it healed. हम डॉक्टर के पास जाएंगे और अपना इलाज कराएंगे। However, if we have a pain in our emotions, we then determine, I must be a bad devotee, I can't let anybody see this pain, and we suppress it. लेकिन अगर हमारी भावनाओं में कुछ कष्ट होता है, तो हम सोचते हैं कि मैं बहुत बुरा भक्त हूँ, और इसलिए इस भावनाओं को कोई देखे ना, तो हम इसको दबाने का प्रयास करते हैं। I don't know where this philosophy came in, but it doesn't go with bhakti. Bhakti is all about feelings. तो पता नहीं ये कहाँ से चीज आई है, बट भक्ति में तो सब भावनाओं पे आधारित है। When you suppress one feeling, you suppress them all. Sorry, they're all connected. तो अगर आप एक भावनाओं को दबाने का प्रयास करते हो, तो आप सारी भावनाओं को दबाते हो, क्योंकि सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। So when we suppress our pain, it doesn't just go away. तो अगर हम अपने दर्द को छुपाते हैं, दबाते हैं, तो ये जाता नहीं है दूर। We end up throwing it on somebody else because it's too much for us to handle. तो अंत क्या होता है कि हम दूसरे के ऊपर उड़ेल देते हैं अपना दर्द, क्योंकि इतना सब हम संभाल नहीं सकते अपने दर्द को। And they throw it onto somebody else, and they throw it onto somebody else. फिर वो हम दर्द किसी और को देते हैं, तो वो किसी और को देते हैं, वो किसी और को देते हैं। This is samsara. This is the material world. We're all throwing our pain at everybody. We're all throwing it around, and no one's leaving. We're all staying here. तो ये इसी को संसार कहते हैं, एक दूसरे का दर्द दूसरे के ऊपर उड़ेलते रहते हैं, ये घूमता रहता है। So as we practice being truthful, we mean what we say, and we say what we mean without blaming another person. तो जब सत्य का पालन करते हैं, तो हम जो कहते हैं उसको, जो बोलते हैं उसको करते हैं, और जो कहते हैं उसको विचार विमर्श करके कहते हैं। And when some pain comes up in us, we investigate it. What's going on? तो Why am I so angry? What's going on here? हमें कोई किसी चीज कष्ट का अनुभव होता है या कोई गुस्सा आता है, तो हम पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं कि ये मेरे को गुस्सा क्यों आ रहा है, इसका कारण क्या है। We're curious about it. तो हम फिर उसके बारे में जिज्ञासु हो जाते हैं। So the third level of integrity तीसरा स्तर है एक निष्ठा का पालन करने का, is we honor our words and we bring honor to our words. तो हम अपने शब्दों का सम्मान करते हैं, जो बोलते हैं हम उनका सम्मान करते हैं, और
I don't know how to say Okay, it. all right. Well, I'll just say it another way. So when we honor our word, तो हम अपने शब्दों का अगर सम्मान करते हैं we honor the persons that we give our word to. और फिर हम उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जिसको वो बोलते हैं, वो जो शब्द देते हैं. I respect you, so I'm going to honor what I said. You know, I said I would meet you, so I'm going to either meet you or I'm going to call you and say we need to reschedule. I'm going to honor you and honor your time, and so I'm going to communicate with you and keep the integrity in place. I'm going to honor you by honoring my words. तो मैं आपका सम्मान करती हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी मेरे को कल आपसे मिलना है तो आपको अच्छे से संपर्क करूंगी, क्योंकि मैं आपको सम्मान करती हूँ तो अपने उस शब्दों का भी मैं सम्मान करूंगी आपके प्रति. So this is very helpful. It's a good practice when we have another person to keep our word to. Generally, we can keep our word better to another person than we can to keep our word to ourselves. तो जिस व्यक्ति का सम्मान करते हैं उसके प्रति आप शब्दों के ऊपर भी आप सम्मान रखेंगे. Yes, so keeping our word to ourselves, that's like keeping our vows, like I want to get up early in the morning and chant. तो अपने शब्दों को सम्मान करना ऐसे ही है. तो आप अगर आप अपने शब्दों का सम्मान रखते हैं तो अपने वचनों के प्रति, अपने संकल्पों के प्रति आप दृढ़ होंगे कि मुझे कल सुबह जल्दी उठ के जप करना है. So as we practice honoring our words to other people, we start beginning to practice honoring the words that we say to ourselves. तो हम लोगों का सम्मान करते हैं तो हम इस चीज़ का भी फिर सम्मान करने लगेंगे कि जो शब्द हम उन सामने वाले व्यक्ति से बोलते हैं. And when we really keep our word and honor our word regularly, तो हम अपने शब्दों को रखते हैं, उसका सम्मान करते हैं नियमित रूप से. the amazing thing is सबसे अद्भुत चीज़ क्या होगी? when we say something, जब हम कुछ बोलेंगे it will happen. ये होगा. Now, who had the most integrity in this room? Srila Prabhupada. तो सबसे ज़्यादा इस कक्ष में सबसे ज़्यादा एक निष्ठा किसके पास होगी? श्रील प्रभुपाद जी. He was impeccable with his integrity. Impeccable. तो उनकी एक निष्ठा पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता था. He kept his records of finances, 37 cents for postage stamp. सो उन्होंने वो रखे हुए थे, कुछ पोस्ट स्टैम्प रखे हुए थे, कुछ पत्रों को रखा हुआ था. He kept his word to his spiritual master. और अपने शब्दों को रखा जो उन्होंने वचन दिया था अपने गुरु को. Even though it might have looked like he waited a long time, बाहरी रूप से लग सकता है कि उन्होंने बहुत प्रतीक्षा करी. he was taking steps to align. Before I go to America, I want to set up an organization in India. I want to translate the first canto of the Bhagavatam. तो जब वो अमेरिका जाने से पहले एक बाद एक कदम लेते जा रहे थे वो, उन्होंने स्थापना यहाँ पे भारत में एक संघ की स्थापना की और कहा कि भागवतम का प्रथम स्कंद लिखा उन्होंने. He started different things to set him up to fulfill on the promise that he made. तो कई सारी चीजें उन्होंने की अपने गुरु के वचनों को पूरा करने के लिए. So aligning and becoming aligned with the words that we speak has powerful effects in the world. तो जब हम बोलते हैं उस वाणी पे, वचनों पे अगर हम एक निष्ठा रखते हैं तो बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालता है ये संसार के ऊपर. This is what it means to be an acharya. यही है आचार्य का मतलब. You live what you speak. जो आप बोल रहे हो उसके ऊपर जीते हो आप. You live it. तो जो आप बोल रहे हो उसको अपने जीवन में अपनाते हो. You walk your talk. आप जो बोलते हो उसको करते हो. Question answer and discussion can be after class. Oh, Hare Krishna. That's okay. It's all Feedback right. after the class. It's okay. It's part of integrity that not just our words, but our attitude. So, तो go ahead. ये सिर्फ हमारे शब्दों के ऊपर ही ये सब चीज़ें निर्भर नहीं करती, हमारी मनोवृत्ति भी इसमें
इसकी मनोवृत्ति के ऊपर भी निर्भर करता है। That means being truthful. इसका मतलब है सत्यनिष्ठ होना। If I'm feeling disturbed, but I'm saying, it's okay, Prabhu, no problem. तो अब मैं परेशान हूं अंदर से, लेकिन बोला ठीक है, सब ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। I'm not being truthful. मैं सत्य का पालन नहीं कर। So that means we have to be really transparent and truthful, because our attitude does come out through our tone of voice and through our actions, through our body language, through our eyes. It comes out. We can't hide it. We think we're good at lying and we're not. तो हम भले अब सिर्फ अपने वचनों के ऊपर ध्यान दें, लेकिन हमारी मनोवृत्ति, हमारी आवाज़ कितनी है और क्या हमारे आँखों की दिशा क्या है, हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारे आव भाव क्या है, उससे पता लग जाता है। हम अपने मनोवृत्ति को अपनी वाणी के द्वारा, झूठ बोलने के द्वारा छुपा नहीं सकते। So, what's it going to take for us to align and to become what Srila Prabhupada wanted for all of us, and what we, in our own heart of hearts, really want for ourselves? तो हम उस कैसे उस रास्ते पे जाएं, उस तरफ अपने आप को मोड़ें कि जो प्रभुपाद जी हमसे चाहते हैं, और हृदय में हम भी जो प्रभुपाद जी के लिए करना चाहते हैं। What's it going to take for us to align with our words? तो वो क्या, कैसे हम कर सकते हैं कि जिससे हम अपने शब्दों के प्रति टिके रह सकें? क्या कर सकते हैं हम ऐसे? Any ideas? कोई बताना चाहेगा? We start small. हम छोटे छोटे स्तर पे शुरुआत कर रहे हैं। We start meaning what we say. तो जो हम बोल रहे हैं वो सोच समझ के बोलेंगे। If we say yes, 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 that means we gotta fulfill on all those yeses. तो हम सबको बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसका मतलब जो सब जिससे बोला है वो सबको ठीक ठीक को पूरा करना पड़ेगा आपको। The word yes तो ये शब्द है हाँ is a precious word that doesn't come out of my mouth unless I'm clear that I'm going to do what I say. तो ये जो शब्द है हाँ, वो एक बहुत ही मूल्यवान शब्द है। वो तभी आएगा बाहर, शब्द मुख से बाहर, जब वो मैं बोलूँगी वो करना होगा मुझे। So before I say yes, I ask a lot of questions. इससे पहले जब मैं हाँ बोलूँगा किसी को, तो उससे पहले बहुत सारे प्रश्न पूछूंगा। How long is this going to take? कितना समय लगेगा? How many months or years do you want me to be engaged in this project? तो कितने महीने या कितने साल आप मुझे इस सेवा में लगा के रखना चाहते हैं? Is there any compensation for my time? तो उस समय का मेरी कुछ पूर्ति, क्षतिपूर्ति होगी क्या? Depending on how much you're asking me to do. तो ये कितना आप मुझसे करवाना चाहते हैं? And when I get all the answers and I'm clear, then maybe I'll say yes. तो जब इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे तब मैं बोलूँगी हाँ। Or maybe I'll come back and say, I can do this much, I can't do this much. कुछ समय बाद और या कुछ समय बाद मैं बोलूँगी कि मैं इतना नहीं इतना कर सकते हूँ। That's the first step, learning how to say no gracefully. तो ये पहला स्तर है, पहला कदम है कि जिसको मैं For sure. Yes, go ahead. तो पहला कदम है कि जो मैं सकारात्मक रूप से या प्रेम पूर्वक किसी को ना कह पाऊंगा। So there are a lot of ways to learn how to think before we speak. Mostly we're on autopilot. तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम जो बोल रहे हैं उसको सोच समझ के बोले। आमतौर पे हम लोग ऑटो पायलट मोड पे रहते हैं, यानी कि जिसमें वो गाड़ी जब जहाज अपने आप चलता है बिना किसी ड्राइवर के। Now Krishna has given us the autopilot mode, luckily, because we wouldn't survive without the autopilot mode at this point of our life. तो कृष्ण ने सौभाग्यवश हमको ऑटो पायलट मोड कह सकते हैं, स्वयं चालित स्थिति हमको दी है कि बिना इसके हम लोग कार्य नहीं कर सकते इस जीवन में। But the autopilot mode is not a conscious mode. क्योंकि ऑटो पायलट मोड जो है एक चेतन स्थिति नहीं है, जागृत स्थिति नहीं है कोई। So we want to start understanding what is our autopilot mode
and how can I little by little become conscious of what my habits are. तो धीरे धीरे हमको पहले पता करना पड़ेगा कि मेरा ऑटो पायलट मोड क्या है, और फिर उससे हम धीरे धीरे करके बाहर आ सकते हैं और अपनी आदतों के बारे में समझ सकते हैं कि मेरी क्या आदतें हैं. I think there's one more box of books that's missing. The one with the birds on it. Is it there? Anyway, I wrote some books about the autopilot mode, about the mind and the false ego. Yes. तो माताजी कह रहे हैं मैंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं मैंने कि मन के बारे में और मिथ्या अहंकार के बारे में. And how we can understand our programming. और कैसे हम अपने जो हमारी जो संरचना है उसको समझ सकते हैं. We all have programming, right? हम सब लोगों का कोई ना कोई संरचना होती है, हम एक विशेष शैली में ढले हुए होते हैं हम लोग. What happens if you have a computer or a phone and you don't understand the programming? क्या होगा आपके पास एक कंप्यूटर है या एक मोबाइल फोन है, आपको उसकी संरचना के बारे में ही पता नहीं होगा तो What happens? क्या होगा? You're on default mode the whole time. You don't have any options, and you just have to do what the computer presents to you. What's that? You can't utilize it properly. There you go. सही से उसका उपयोग नहीं कर सकते जब हमें पता नहीं होगा उसके संरचना के बारे में. I'd like to say we probably know more about our cell phones than we know about this sophisticated programming in this machinery. I'm serious too. It's funny, but it's not. तो माताजी कह रही हैं कि मैं कहना चाहूँगा कि जितना हम लोग अपने सेल फोन के बारे में अच्छे से जानते हैं, हो सकता है उतना अपने इस संरचना के बारे में ना अंदर की क्या हमारे मन में क्या चल रहा है उतना ना जानते हो. See, here are the two birds in the heart. तो ये दो पक्षी हैं हृदय में. Krishna's the blue bird. तो नीले में कृष्ण है. And we're the jivas. See, the jiva's kind of like in a robot. तो एक इधर वाले जो हैं जीव है वो रोबोट की तरह है, यंत्र की तरह. Autopilot. He doesn't even know Krishna's next to him. तो ये ऑटो पायलट मोड में है, इसको पता भी नहीं लग रहा कृष्ण मेरे बगल में ही है. So this book is about the mind and false ego, and it really really helps us to understand our machinery physically, emotionally. It really describes a lot about that. तो ये बुक पुस्तक बहुत ही सहायक है हमारे अपने अंदर के क्या ढांचा है, क्या संरचना है हमारी, उसको समझने के लिए, हमारे मन को समझने के लिए. And this book is about the anarthas. और ये जो पुस्तक है ये अनर्थ के बारे में, हमारे जो अंदर जो अनर्थ है, which I like to call habits. और जिसको मैं कहना चाहूँगी हमारी आदतें. Sometimes when we talk about the mind and the false ego, they're so big and overwhelming, we just kind of shut down because it just overwhelms us. It's too big and vague. तो कई बार जब बात करते हैं अपने मन के बारे में, मिथ्या अहंकार के बारे में, तो बहुत बड़ा ये जटिल विषय लगता है, तो हम उसको ध्यान नहीं देते. And sometimes when we talk about the anarthas, oh, we don't want to see those demons inside of us, and we just kind of shut down and push it down. तो कई बार जब हम अपने अनर्थों के बारे में बात करते हैं तो हम आंख बंद कर लेते हैं कि मैं अपने अंदर के असुर को नहीं देखना चाहती, बस उसको दबा देते हैं और उसको बंद कर देते हैं. So we chant, and we think that automatically everything will just evaporate. We're just going to chant and do service, and all the problems are just going to evaporate. तो कई बार हम लोग जप करते हैं तो सोचते हैं कि जब करेंगे सारी समस्याएं भाप बन के उड़ जाएंगी और कोई समस्या नहीं रहेगी. I liken the chanting to making ghee clarified butter. I liken the chanting to making ghee. Yes. Yes. Clarified butter. Okay. तो चैंटिंग को माताजी कह रही है, मैं बताना चाहूँगी घी बनाने की तरह है. So the chanting is the heat. चैंटिंग एक अग्नि है, वो अग्नि है. And so when you turn the heat on the butter, after a while, what comes up? तो आप जलाते हो उस मक्खन को, जलाते हो अग्नि पे, तो बाद में क्या निकलता है?
She said it. The impurities come up. तो जब मक्खन को जलाते हैं आग के ऊपर, सबसे पहले क्या उसकी गंदगी निकलती है। You can't have clarified butter with impurities. तो आपके ऊपर शुद्ध घी बिना अशुद्धता के साथ नहीं मिल सकता आपको। You can't have a clarified heart with impurities. तो आपका शुद्ध हृदय होगा आपका और अशुद्धियों के साथ, ये दोनों चीजें संभव नहीं है। So the chanting brings up the impurities. तो हरि नाम जप जो है वो Go ahead. हमारे हृदय की अशुद्धियों को ऊपर निकालता है। So we can see them because they're mostly in the subtle, invisible realm. तो हम उनको देख सकते हैं क्योंकि पहले वो सूक्ष्म रूप से दबी हुई थी हमारे हृदय में। And what happens when they come up and we see them? What happens? क्या होता है जब उनको देखते हैं, ऊपर जब आते हैं, जब उनके हम अपने गंदगी और हृदय की गंदगी को, अनर्थों को देखते हैं। What do we often do, or anyway, what did I do? What do we often do? क्या करते हैं आमतौर पे when they come up? जब ऊपर आते हैं? Ignore. What did you say? Suppress. We stir them back in. We don't want to see that. Let's just stir them back in there. तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी उसको ये अनर्थ जैसे ऊपर आते हैं, उसको कहते हैं वापस जाओ, ये हमको नहीं चाहिए। And then we're like, why isn't this chanting working? और हम फिर सोचते हैं कि अरे ये जप जो है कार्य क्यों नहीं कर रहा। We actually have to deal with the impurities and scrape them off and heal. तो वास्तविक रूप से हमको उन अशुद्धियों के ऊपर कार्य करना पड़ेगा, उनको धीरे धीरे करके निकालना पड़ेगा ऊपर। It's a simple process and it does work. आसान विधि है और ये कार्य भी करती है। But not if we sabotage the process by stirring everything back in. तो ये उससे नहीं होगा कि आप सारी चीजों को अंदर दोबारा दबा के रख दो। That's what suppression does. यही सप्रेशन, यही कार्य करती है। I did it for 27 years. ये मैंने निजी रूप से अपने जीवन में 27 साल तक यही किया। And I thought I was an advanced devotee. मैंने सोचा कि मैं एक बहुत ही उन्नत भक्त हूँ। And then all the stuff came up in my face and I was pretty angry. और ये सारी चीजें मेरे सतह पे आई, चेहरे पे आई, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। But the truth will set you free. सत्य आपको मुक्त करेगा। And when I realized I was just a blind follower and I hadn't taken the steps to introspect and I had been stirring everything back in, when I started being honest, I could see more clearly and then I could take the steps needed. तो जब मुझे पता लगा कि मैं एक तरह से अंधे की तरह मैं पालन कर रही थी और बिना आत्मनिरीक्षण किए हुए, तो फिर धीरे धीरे करके मैंने उस चीज़ को, एक चीज़ को बाहर निकालना शुरू किया। This process works. ये विधि कार्य करती है। We have to follow the process. लेकिन हमें इस विधि को पालन करना होगा। So this book is about the anarthas, which I call habits, because we don't like to think that we have anarthas. तो ये दूसरी पुस्तक जो है वो हमारे अनर्थों के बारे में, जिसको मैं आदतें कहती हूँ, क्योंकि हम लोग अपने अनर्थों को, अपने आदतों को देखना नहीं चाहते। Our conditioning is nothing more than habits. हमारी क्या कंडीशनिंग है, जो हमारी बद्धता है वो क्या है? हमारी आदतें ही हैं। And how did we get those habits? कैसे हमें आदतें मिलती हैं? Repetition over time, over and over and over again. तो बार बार जब चीज़ों को दोहराते हैं फिर हमारी आदतें बन जाती हैं। And how do we get new habits? कैसे हमारी नई आदतें बनती हैं? Practicing something new over time. कुछ नई चीज़ का नियमित रूप से पालन करना। So integrity helps us to stay balanced. तो इंटेग्रिटी जो एक निष्ठा है वो एक तरह से संतुलन बना के रखना है। So for me, integrity is a reminder to me of what I can and can't do in reality. तो इंटेग्रिटी है, एक निष्ठा है, ये मेरे लिए एक तरह से एक रिमाइंडर, तो एक तरह से मुझे याद दिलाता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ वास्तविकता में। If I start forgetting things or not following through on something, I realize I'm taking on too much. It's slipping between my fingers. I can't do it. तो मैं कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ या मैं फॉलो अप नहीं कर पाती, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ चीज़ ज़्यादा ले रही हूँ। If I start getting sick, I'm like, I'm pushing myself too hard. I can't do it. तो अगर मुझे लग रहा है कि मैं बीमार हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर रही हूँ या आगे सेवा दे रही हूँ।
And the thing about honesty and truthfulness is, it helps us to be humble. और सत्य सत्य बोलना और ईमानदार रहना ये जो है आपको विनम्र बनने में सहायता देता है. I don't particularly like to use the word humility because if you think you're humble, you're probably proud that you're humble. तो मैं ये विनम्रता मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि अगर कोई बोलेगा विनम्र हूँ मैं तो उसको वो विनम्रता का ही अहंकार हो जाएगा. However, honesty, I can be honest, and I'll just be honest, and I don't think that that's humble, but it's honest, and that's like keeps me grounded, keeps me from thinking I'm way up here when I'm actually right down here. तो जब मैं बोलती हूँ कि मैं ईमानदार हूँ तो ठीक है जो है मैं बोल देती हूँ हम्बल विनम्रता हो या ना हो तो इससे मेरे को ये जमीन पे ही रहने देता है मतलब जमीन पे ही रखता है मेरे को. So anyway, I have only 10 copies of these two books, and I have a book about my own life and how my parents became really upset when I became a fanatical devotee, and what we went through, a big mess. And the other book is about compassion. And let me have the Hanuman book. This is about really how to use our words and how to align our words in truth. तो दो पुस्तकें हैं एक ये कह रही कि मेरे पास 10 प्रीतियां हैं और एक ये बुक है व्हाट टू डू अबाउट यू. तो ये मेरा निजी जीवन है कैसे जब मैं भक्त बनी तो मेरे परिवार वालों को इससे परेशानी हुई और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें. और तीसरा ये कैसे हम लोग अपने शब्दों को सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं. And the interesting thing is I put all my mistakes in these books. तो सबसे रोचक बात यह है कि मैंने सारे जीवन में जो भी गलतियां की हैं वो इस पुस्तक में मैंने डाल दी. I made lots of mistakes. और मैंने बहुत सारी गलतियां की अपने जीवन में. So I wrote about them so you don't have to make the same mistakes. तो मैंने सारी गलतियों को लिखा ताकि आपको भी वो गलती दोबारा ना करनी पड़े. You can make your own. आप अपनी गलती बुक लिख सकते हैं अलग से. So Prabhupada said one time, प्रभुपाद जी ने एक बार बोला था, what we learn easily is easy to forget. तो हम जो चीज़ आसानी से याद करते हैं उसको आसानी से भूल भी हम आसानी से सकते हैं भूल जाते हैं आसानी से. Sometimes the lessons in Krishna consciousness are difficult. कई बार तो कृष्ण भावनामृत में कुछ शिक्षाएं बहुत मुश्किल होती हैं. Prabhupada also said, what we learn with difficulty is difficult to forget. तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो चीज़ हम मुश्किल से सीखते हैं उसको भूलना मुश्किल होता है फिर. So oftentimes what we learn through experience really hits our heart and transforms us because, wow, oh my gosh, what did I do? तो जब हम अनुभव सीखते हैं तो कई बार वो बहुत गंभीर रूप से हमारे ऊपर एक तरह से एक छाप छोड़ता है जिससे हम समझ जाते हैं कि मैंने क्या किया कैसे किया. So, how many of you think truthfulness is important? आप में से अब कितने लोग सोचते हैं कि सत्य बोलना बहुत जरूरी है. How many of you would like to start aligning your life more in alignment with truthfulness? तो आप में से आप कितने लोग हैं जो अपने जीवन को एक तरह से लेके आना चाहते हैं सत्य की तरफ सत्य के मार्ग की तरफ. How many of you are willing to take the little steps and to acknowledge yourself for the little steps that you take? तो आपका में से कितने लोग हैं जो छोटे कदम लेना चाहते हैं उस तरफ आने के लिए. It's little steps, it's that little practice day in and day out that creates new habits. It's not a magic formula, it's just the way things are. You practice and what you practice becomes real. तो ये ऐसा नहीं कोई जादू की छड़ी है एकदम से हो जाएगा. धीरे धीरे आपको अभ्यास करना पड़ेगा. जो चीज़ आप अभ्यास करोगे धीरे धीरे वो एक वास्तविकता बन जाएगी. And as a matter of fact, masters practice more than beginners. तो और एक तथ्य के रूप में जो शिक्षक होता है वो नवागंतुकों की अपेक्षा और गहरे तरीके से अभ्यास करता है. Someone who's learning harmonium, they might practice an hour a day. पर कोई व्यक्ति जो हारमोनियम सीख रहा है अभी तो वो हो सकता है 1 घंटे अभ्यास करे. Someone who loves harmonium and is a master
may practice hours a day. तो कोई व्यक्ति जो हारमोनियम से प्रेम करता है और उसका शिक्षक है, उसको प्रशिक्षित है अच्छे तरीके से, तो घंटों घंटों उस पे लगा रह सकता है हारमोनियम पे. So when we can really align with integrity and become a master at integrity, our lives will transform. तो अगर हम एक जीवन जीते हैं अपने एक निष्ठा के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, और उसके तरह से शिक्षक बन जाते हैं, तो वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा. And we'll honor Srila Prabhupada by living his integrity. तो और हम इस एक तरह से प्रभुपाद जी का भी सम्मान को भी सम्मान दे सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं ऐसा जीवन जीने से. Are there any questions or comments or corrections or discussion? कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी या कुछ चीज है जो आप चर्चा करना चाहते हो? I'm open to hearing. There's one right there. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Question is that it takes courage and guts to say truth, and sometimes we do not know that the person to whom we are asking for advice or help, whether he will be able to resolve or he is competent enough. So it's difficult to find such persons. That's a very, very important point. Thank you for bringing that up. Go ahead, you translate. Go ahead. Say it in Hindi. प्रश्न ये है कि हम सत्य बोलना चाहते हैं और सामने से हेल्प भी मांगना चाहते हैं, बट समस्या ये है कि जिससे हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो क्या हमारी बात को समझ पाएगा कि नहीं पाएगा, और अगर समझ भी लिया तो क्या हमारी हेल्प करने के लायक हैं कि नहीं है. It's very important that especially the vulnerable parts of ourself, we don't just open it up to anybody. We have to find someone who can hold the space without judgment and confidentially. तो ये एक बहुत जरूरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपने जीवन का, अपने हृदय का वो हिस्सा जिसमें कुछ रहस्य हैं, वो हम लोगों से खुलेआम नहीं प्रकट करते हैं. तो ये हमें डर रहता है कि कहीं हमें वो जज ना करे, कहीं हमारे पूर्व रूप से हमारे ऊपर कोई टिप्पणी ना करे, या फिर वो इस रहस्य को कैसे रख पाएगा. These are two parts of integrity. If you're opening your heart in confidence, I need to hold that confidentially and not tell anybody. That's integrity. तो अगर मैं किसी से सामने वाले के से अपनी बात रख रहा हूँ गुह्य रूप से, तो वो क्या व्यक्ति उस गुह्य चीज को रख पाएगा, कोई वो किसी और से तो नहीं कहेगा. तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण ये कह सकते हैं कि हिस्सा है सत्यनिष्ठा का, एक निष्ठा का. So we definitely need to find somebody who can hold with confidentiality and without judgment. तो इसीलिए हमें एक व्यक्ति को ढूंढना होगा जो हमारे इस गुह्य चीज को रख सकता है संभाल के, बिना किसी को एक्सपोज किए, बिना किसी को. There is an organization within ISKCON that is training people how to listen like that. It's called Karuna Care. Karuna Care. Karuna Care. Karuna means compassion. Go ahead. Compassion. Yes. So हमारे ISKCON में भी एक ऐसा विभाग है करुणा केयर के नाम से, जो इस चीज में में मदद करता है. I would be I am a part of Karuna Care. I'm a chaplain with Karuna Care, and I offer services with Karuna Care. I would be really happy if so many people could take the courses, if temple presidents could take the courses. As much as we need the philosophical knowledge, we also need the heart knowledge to be able to hold the space to encourage one another to stay in this process over the long term. That was a lot. तो ये मैं उसका एक हिस्सा हूँ, उस करुणा केयर उस विभाग का. तो मैं कई सेमिनार दिए, क्लास दिए. तो मेरी इच्छा है कि मंदिर अध्यक्ष जो हमारे लीडर्स हैं वो इस सेमिनार को करें, ताकि ये कृष्ण भक्ति के दर्शन को जानने के अलावा वो इस चीज़ को भी जान सके कि कैसे हम लोगों को एक अवसर दे ताकि अपने कृष्ण भावनामृत की चीज़ें हमसे साझा कर सकें और वो अपनी प्रगति भी कर रहे हैं. If we could add that aspect to our communities and have safe places where people could reveal their heart in confidence, it's one of the 6 exchanges of love.
but people are afraid that the confidence will be broken. तो अगर ये हमारे इस समाज में ऐसा हो जाए, भक्ति के कमी इस्कॉन के समाज में, कि लोग अपनी बात तो हृदय की बात एक दूसरे से शेयर कर सकें या साझा कर सकें, तो ताकि उसकी गुह्यता को मतलब वैसे ही रखा जाए। बट आमतौर पे लोग डर जाते हैं कि कहीं मैंने इससे कुछ बातें, मैंने अपने निजी बातें कहीं तो कहीं किसी को बोल तो नहीं देगा। So we're starting. हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। We're starting somewhere, and there are places where you can find people who can keep confidentiality, and then you can begin to heal. And if you can't find it within the movement, maybe you want to find it with outside of the movement, talking to someone outside, not about your complaints, but about what's going on inside of you, and that's how it can be kept confidential. So whatever it takes to heal those inner parts, to reveal them, to put them in the sunlight of truth, and to heal them, it's part of our process. We deserve to do this. तो ये हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आप कृष्ण भक्ति में आप अपने हृदय की बात किसी से प्रकट कर सकते हैं। हो सकता है आपको कृष्ण भावनामृत के अंदर ऐसे ना मिले, तो बाहर आप किसी को आप ये शेयर कर, ये आपको इसको अपनी हृदय की बात बता सकते हैं। बट हम लोग इसका प्रणाली में हर हमेशा धीरे करके इसको हम लोग ला रहे हैं। So if you want any more information about that, I can let you know. Thank you. Hare Krishna. Any other thoughts, comments, questions? Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Thank you for this wonderful session. I have a question. Like, there are some situations in life that we ought to tell lies, and we can't escape that situation. So what steps can we take during that point of time if we face such kind of situations in life? Go ahead, translate. Hindi. So मेरा प्रश्न ये है कि कई बार हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जहाँ पे झूठ बोलना अनिवार्य हो जाता है और उस परिस्थिति से हम निकल भी नहीं सकते, तो उस परिस्थिति में हम ऐसा क्या करें? Start small. Don't start with the biggest, most difficult ones. तो छोटे से शुरुआत कर सकते हैं, बहुत बड़े से शुरुआत मत कीजिए। Start with watching your words, keeping your little promises to your friends or meetings, going to your meetings on time, going to work on time. Start with the little things that you can do. Start there, then you'll develop your muscle of truthfulness. तो आप छोटे से शुरुआत कर सकते हैं, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से। आप मीटिंग में जा रहे हैं तो बोलिए कि आप इतने बजे मीटिंग में जा रहे हैं, तो आप जाइए। ऐसे कर करके आप अपने मसल्स को आप और मजबूत बना सकते हैं। The more you exercise your muscles, the stronger you'll become. जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप मजबूत बनते जाएंगे सत्य के रास्ते पे। And then you'll be able to have those difficult conversations, the truthful conversations that are difficult to have, but you can have those conversations with compassion and care and truthfulness. तो उस with practice. तो जब आप अभ्यास हो जाएगा धीरे कई बार मुश्किल परिस्थितियों में भी कई बार आपको लग रहा है कि मैं को झूठ बोलना पड़ रहा सकता है, तो उस परिस्थिति में आप सत्य बोल के भी करुणा के साथ उस चीज़ को आप रख सकते हैं। You come closer and closer and closer to the truth. You just keep bringing it closer and closer, and then when you get something down, then you do the next thing, but you don't drop what you've already accomplished. You just keep expanding it into the different areas of your life. It takes time. It's a muscle to exercise. इसमें समय लगेगा, फिर धीरे और उसको पढ़ाइए, और जीवन के अलग-अलग आयामों, आप अलग-अलग परिस्थितियों में भी आप इसको अपना सकते हैं। So start with what you can. तो आप जो आप कर सकते हैं उससे शुरुआत कीजिए। And make note of what there is yet to do. और आप इसको भी आपने अंदर रखिए कि भाई मैं क्या और चीज़ों में अपना सुधार कर सकता हूँ। Be honest to yourself that I'm telling a lie. तो ये अपने से ईमानदारी रखिए कि मैं दूसरों से झूठ बोल रहा हूँ। Does that make sense? Yes, totally. Okay. Next. Hare Krishna, Mataji. So my name is Kshitij and I've been working in the corporate since 4 years. And as you said, there's an art of saying no, right?
So I'd like to seek some of your guidance on that, as I believe I have been the sufferer of that situation, because when you say no to someone or your friends or family, you end up somewhere hurting them. And even in the corporate area, right, when you say no to your boss or some seniors, you get some sort of judgment that okay, fine, you're not capable enough. And I've been into this situation and I really don't know how to handle it. So I'd like to request some of your guidance on that particular art. So what do you want, corporate or friends? Both. Okay, we'll start with friends. Sure. Thank you. You're my friend. Oh, I'm sorry, go ahead, say it in Hindi. Okay. So मेरा क्वेश्चन ये था, लाइक हम अपने लाइफ में कई बार हम लोगों को मना करना चाहते हैं. लाइक एक तरीका होता है ना बोलने का, जो आप अगर किसी को ना बोलते हो तो आप एंड अप करते हो लोगों को हर्ट करते हुए, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ समवन, अगर कोई आपसे कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहता है और आप उतने केपेबल नहीं हो, राइट, बट समवेयर आप एक सॉफ्ट हो जाते हो एंड यू हेल्प, बट एंड में आप चीटेड होते हो. सो ऐसी आपकी Jai Shri Shri Radha Govinda, Jai Hare Krishna. Haribol. Jai, 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 Shri Radha Govinda Ji. Jai, 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 Sitaram, Lakshman, Hanuman. Haribol. It's integrity to honor the Lord when He shows His face to us. Thank you. तो ये भी एक रिश्ता है कि जब भगवान दर्शन दे रहे हैं तो उनका सम्मान करना. So, let's say you're my friend. पहले मित्रों से शुरुआत करते हैं. We've been friends for a while. तो आप कुछ समय से मित्र हैं. I really honor you and I would never want to hurt you. तो मैं आपका सम्मान करता हूं और मैं आपको कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता हूं. And I'm trying to practice being honest. मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं ईमानदार रहूं. And I know you asked me to come help you with this project. तो मुझे पता है कि आप asked me help you with the project. तो आप इस मतलब मेरे प्रोजेक्ट में इसमें मेरी मदद कर सकते हैं. And I'd like to help you. I just don't know how I would be able to do that with all the other things I have on my plate. तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास और भी चीजें हैं. So I don't know what to say. I mean, I want to help you, but I just know how much I have on my plate, and I don't want to hurt the other people that I've already said yes to. तो मैं मदद करना चाहता हूँ आपके, लेकिन मेरे पास कई और सारी चीज़ें हैं और मैंने कई और वचन दे रखे हैं लोगों को ये कार्य करने के लिए. Is there something I can do that's maybe, what do they call that? Long distance, what do you call that? Working from home, what do you call that? Freelancer. No. What is Hybrid mode you're talking about? What's that? Hybrid mode, sometimes you work from home, sometimes you work from office. Just like, is there something I can do where it won't take me so much time? I don't have travel time or something. Can I help you with something like that? What I'm saying is, I don't have a lot of time. Can you give me some piece of it that won't take me a lot of time? Or I don't have any time. तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास कोई समय बहुत कम है तो थोड़ा सा मेरे को दे सकते हैं ताकि मैं उसको कर सकूं, और अब ये कह सकते हैं मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है. So how did that feel when I said it like that? कैसा लग रहा है कि जब मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं तो? You asking me? Yes. That's great. That's a great answer, actually. Yeah, well, that's what you do when you tell the truth. I don't want to hurt you. You are my friend. I also don't want to lie to you, and I also don't want to tell you yes when I know that I'm not going to be able to do it, and then I'm going to disappoint you even more, and then you'll probably hate me even more. That's Wonderful. Thank you very much. That's another way to say it. तो ये तो कह रहे माता कि मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे पास बहुत सारी और इस बीच सारी चीज़ें हैं, तो अगर मैं उनको ना बोलती हूँ तो उनके प्रति अपना कमिटमेंट तोड़ती हूँ. तो मुझे पता नहीं कैसे कहना है, बट मेरे पास समय नहीं है, तो
तो यही चीज़ है। So in regards to a boss, अगर बॉस हैं आपके, you know, if you can be honest with your boss and say, hey, look, you want me to do this by this deadline, you want me to do this by this deadline, which job is more important, because I can't do them both unless you want crap jobs. तो आप तो अगर बॉस की बात की जाए तो आपके बॉस बोलते हैं यहाँ इतनी तारीख तक ये कार्य करना है, इतनी तारीख तक ये कार्य करना है, तो आप बता सकते हैं कि आपके पता है कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, क्योंकि मैं दोनों कार्य एक साथ नहीं कर सकता। I'm into quality and I want to preserve the dignity of our company and our customer relationships. तो मैं क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, तो मेरे को अपने एक ने उस चीज़ को बना के रखना है अपने कंपनी के। And if I try to do two jobs, you're probably going to have two people that are dissatisfied rather than having one person that's really satisfied. तो अगर आप दो कार्य मेरे को दोगे तो दो लोग ऐसे होंगे जिनको मैं असंतुष्ट करूंगा, बजाय इसके कि एक ही व्यक्ति है जिसको मैं संतुष्ट करूं। So which one's more important to you? क्या आपके लिए ज़्यादा जरूरी है? Right? Wonderful. Thank you very much. It's honesty. I can see that we're past time now. I know everybody has busy lives and they have a lot of things to do. I think I really value, you know, that you all came to hear this class. I value your journey in Krishna consciousness, that you're really wanting to align your heart and your soul with your life. It's not easy to do that. It takes lots of practice. तो अभी देखो समय भी हो रहा है और मुझे पता है आप लोगों के बहुत बिजी शेड्यूल हैं, बहुत व्यस्त जीवन है, उसमें से आए हैं और आप सीखना चाहते हैं कृष्ण भावनामृत में, आप अभ्यास करना चाहते हैं कैसे अपने जो आदर्श हैं उनके ऊपर आप चल सकें। So I just wanted to say thank you to everybody. I will be selling these books after the class. There's a special deal. I only have like 10 copies of these 2 books. If you buy these 3 books for 400 rupees each, you get this one free. That's that 1,200, gives you 4 books. And if you buy these 2 books, you get a discount, and it's only 600 for these 2. I have more copies of these. So, and I have GPay, QR code. तो माता जी कह रही हैं इनके पास कुछ पुस्तकें यहाँ पे खरीद सकते हैं, तो कुछ विशेष ऑफर हैं, 2 बुक लेंगे तो 1 बुक लेंगे तो इसमें कुछ 1 बुक फ्री मिलेगी, 2 बुक लेंगे तो उसमें कुछ उधर वो डिस्काउंट मिलेगा। Thank you for your time and your attention. All glories to Srila Prabhupada and all glories to the assembled devotees. Thank you. हरे कृष्ण। हरे सुखवा माताजी की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप दोनों बैठे रहिए टू गिव द रिस्पेक्ट टू द स्पीकर। पहले कुछ अनाउंसमेंट है, आप सब 2 मिनट बैठ सकते हैं। तो माताजी, वी आर वेरी थैंकफुल एंड रियली इट वाज वेरी रिलिशिंग एंड नरिशिंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो माताजी ने जैसा बताया सब समझ गया होंगे। माताजी ने की कुछ पुस्तकें हैं जो माताजी बताया है, उस तरह के एक्सपीरियंसेस को माताजी ने अपने पुस्तक में लिखा है और इतने कम टाइम में इतना कुछ बताना संभव नहीं है। तो माताजी ने जो थोड़ा बताया है वो उसका ग्लिम्स है और इसकी टेक्निक्स को आप समझना चाहते हैं और डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो ये बुक्स के अंदर है, इस बुक्स को आप ले सकते हैं। माताजी ने कई सारे डिस्काउंट बताए हैं, बट दीज बुक्स आर सो प्रीशियस, इसमें डिस्काउंट पैसे का कोई तुलना नहीं है। माताजी के बारे में जैसे बताया मैंने आपसे, माताजी प्रभुपाद के डायरेक्ट डिसाइपल हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य है कि हम अभी इन डिसाइपल्स का संग कर पा रहे हैं, हम सर्व कर पा रहे हैं। एंड फॉर कमिंग मेनी ईयर्स लाइक 10-15 years we will not able to see the disciples of Srila Prabhupada. So we are here, Maharaj, Mataji, to see Prabhupada through you, and really it's very nourishing for me personally, Mataji. So आप सब भी चाहें तो माताजी से पर्सनली मिल सकते हैं और ये बुक्स ले सकते हैं। और माताजी ने मेरे को सुबह बताया था कि ये माताजी की इंडिया में लास्ट ट्रिप है, बट हम ऐसा चाहते नहीं। माताजी प्लीज़ यू कीप ऑन कमिंग। माताजी वाज सेइंग, you were saying that this is the last trip, probably the last trip to India. Not but to India, but maybe up north here. I'm not sure if I can make it again. So we're really praying for Prabhupada and Radha Govind that you please keep on coming to enlighten us and to give out your presence, your teachings to us. So really we are very grateful and very thankful to Mataji. आपसे निवेदन है, आप सब अगर चाहें तो इन पुस्तकों को ले सकते हैं and Mataji personally give you the sign and autographs for your memories. And
किसी कोई पर्सनल प्रश्न भी है तो आगे माता से पूछ सकते हैं इन पर्सन. So Mataji, I will definitely thank you again for from our core of our heart. I feel it. I can feel you. You said So it thank you well. so much. I Thank you got so much for coming here and giving us so wonderful association, Mataji. Really, it's very nice and very good fortune for us. So Mataji के लिए हम लोग चैंट करेंगे, धन्यवाद करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे सुखवा माताजी की, श्रील प्रभुपाद की. I got it. Thank you. It was from your heart. I got it. So आप प्लीज जिसको चाहिए आ सकते हैं माताजी के पास.